So if you will see these many particularly ट्रांजेक्शंस आइसोलेशन लेवल जो हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर ये इसका टेबल दिया हुआ है कि रीड अनकमिटेड में कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, रीड कमिटेड में, रिपीटेबल रीड, सीरियलाइजेबल में, करेक्ट। उसके बेस पे यू कैन टेक केयर दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ आइसोलेशन इज सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो Okay. सीरियलाइजेबल जब भी आप यूज करेंगे तो उसमें आपके फेंटम रीड, नॉन रिपीटेबल रीड, dirty read and serializable dilation anomaly or everything will be getting taken care, वो सब चीज टेक केयर हो जाएगी, राइट। तो ये जो लिंक है आई विल शेयर इट। सो मेजरली इन स्प्रिंग बूट और जब भी आइसोलेशन लेवल यू कैन डिफाइन इट, दैट इज द वे यू कैन डिफाइन इट, ठीक है। प्रोपोगेशन रिक्वायर्ड न्यू, इसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, करेक्ट। एंड देन रोल बैक फॉर, तो तो प्रोपगेशन रिक्वायर्ड बस इतना है कि अगर पेरेंट ऑलरेडी ट्रांजेक्शनल है तो देन लाइक यू यू विल बी कंसिडर्ड एट द सेम ट्रांजेक्शन एज द पेरेंट। हम्म, और अगर पेरेंट ट्रांजेक्शनल नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन एंड यू आर क्रिएटेड लाइक यू नो लाइक टर्म्ड एज सेपरेट ट्रांजेक्शन। और हम्म, अगर रिक्वायर्स न्यू है तो उसमें बाय डिफॉल्ट यू विल बी कंसिडर्ड एज it सेपरेट। will create a new one. Okay. If the parent is non-transactional only. Correct. Okay. Parent means the caller method. Yes, of course. So this is basically for, and this propagation required and propagation required new, since it only applies to newly started transaction. Okay. Okay. And ये तो बेसिकली ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एंड दैट पर्टिकुलरली फॉर व्हाट वी कैन से रोल बैक फॉर, एंड अभी इसमें टाइम आउट भी यू कैन डिफाइन इट, कि टाइम आउट कब कितना टाइम में ये टाइम आउट हो जाएगा। मे बी योर ट्रांजेक्शन इज टेकिंग अ टू मच टाइम, सो इट इज टेकिंग अ बाय डिफॉल्ट टाइम आउट, राइट, इन सेकेंड्स, बट यू कैन ऑल्सो डिफाइन दैट टाइम आउट, कि you can define if it is a, let's say 30 seconds, it will be a timed out, like that. So timeout you can define it. So here you will see in this rollback far and no rollback far. So rollback far is basically when you wanted to any specific exception पे ही तुम्हें यदि rollback करना है तो you can specify that rollback far and you can specify that dot class, correct. Okay. Okay. एंड नो रोल बैक फॉर के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये नो रोल बैक फॉर क्लास, राइट। सो some certain is you can specify, right, any particularly no rollback for specific transactions, correct. Also, like in rollback, even if there is any runtime exception, it will Yes, then roll back. also it will be a rollback, Okay. ठीक है। So this way you can just say how you can roll back and no rollback, correct. So when you are specifying transaction here, so in that transaction you can specify, let's say, not, so it is just we are doing the recap here. Okay. So when you are specifying here method, let's say you are writing into any service class, right? So let's say it's a service you are writing here, let's say public class account service, correct. And then in this, if you are writing here, let's say public boolean save account. So in that scenario, how you wanted to define, so either you can use that transaction for properties for all these transactional, right, or you can also define at the method level as like that, correct. So at the rate transactional, in that scenario you can specify here
isolation is equal to isolation dot, let's say, default or serializable. Correct, something like that you can say. Propagation is equal to propagation dot required. Correct, like this. No rollback for. So you can specify specific transactions, right? So let's say no rollback for here, let's say for account not found exception. Dot class, like this. And if you are using for rollback for, so you can say specific rollback for. You can also say here rollback for. So you can say, let's say for SQL exception dot class. So rollback for in this, but also it will in rollback, it will be basically rollback for all these runtime exceptions as well. So this way you can basically implement the transaction isolation level we have discussed, right? Dirty read, phantom read, repeatable read, and all these read write problems, and how you can take care through the isolation. This is a very important concept as far as the interview is concerned. Isolation level, propagation, timeout, rollback for. These things you need to always keep in mind as far as that interview is concerned. Maybe people will ask how you are handling a transaction here. Correct. In microservices level, we handle the distributed transaction using that Saga and other patterns that is we will discuss later. But in this scenario, this is you need to have a fair understanding for this. Very important topic.